Hello students, myself Abhi Kumar Sharma, working as assistant professor in the Department of Agriculture. Now I am starting with next topic of biochemistry subject, that is herbicide absorption and translocation and mode of action. In this lecture we will cover two topics, that is herbicide absorption and translocation. Second one is the mode of action, that is what are the sequences of steps of herbicide application from the spray to the death of the plant. So let's start with the herbicide absorption and translocation. In the herbicide absorption is the, that is retention or staying of spray over the plant part. So what are the factors which are inhibiting or which are enhancing the absorption of herbicide over the plant part? So you can before here we have a diagram. See, it depend upon the leaf surface. Sometimes the leaf surface having pubescent surface, that is pubescent surface is the surface that having hairy surface, having hairs, small hairs over it. If these hairs can easily hold the spray droplet, but the second thing, if these hair are very dense, it may or it can inhibit the absorption. But if they are in less in number, having not very dense, then they can easily hold the droplet of a spray. But if the leaf surface is waxy, in the second you can see, if the leaf surface is waxy, so it doesn't allow the droplet to stay over it, or doesn't allow to absorb by the leaf. So what happen, it just run off over the surface of the leaf and not get absorbed. So this is very ineffective of spraying herbicide if the leaf surface is very waxy. If it is non-waxy surface, then you can see in the diagram, it can easily get absorbed over the surface of the leaf. So the spray droplet spread on leaf surface is influenced by the leaf pubescence and waxiness. So in this you have seen what type of leaf surfaces are allowing the spray droplet to absorb, or those are not, some are not. So the greater the spray intention by the plant is likely to the result in the more herbicide absorption. So जो हमारी spray retention है over the plant is the result of herbicide absorption. That is, if they get absorbed, that this means the spray is retained over the plant. So depend upon the different leaf surfaces, that is waxiness, pubescence, that hairiness, orientation are among the characteristics that affect the spray retention. So in the next diagram you have seen that what type of leaf surface are retaining, or what type of are preventing the spray droplet to absorb over the plant surface. Herbicide translocation is by the mean of transporting tissues, that is xylem and phloem in the plant, that are responsible for the translocation. That is the movement of water and minerals from with the help of xylem from the root to the leaf part, where the photosynthesis take place or preparation of food take place in the plant. After the preparation, the prepared food get transferred in the plant, both in the upward and downward direction. So in this diagram you can see, keep in mind one thing, ki xylem is always having onward movement, that is from downward to upward, but the phloem having both movement in both direction, both in upward and as well as in downward direction. So in this picture is showing the different type of the herbicide responsible or for herbicide action, and also you can see ki what different type of herbicides are translocating with different
transporting tissues, that the herbicides that are translocating with the help of xylem from the root to the leaf part are atrazine, command, balance. The herbicides are translocating with xylem and phloem are both in upward and downward direction, that is 2,4-D, benval, tordon, gluon, pursuit. देन फ्लोएम के साथ जो ट्रांसलोकेटेड होंगे दैट इज़ राउंड अप, पोस्ट. देन फोलियर कॉन्टैक्ट दैट इज़ दैट आर जो हमारे, और दोज आर ट्रांसलोकेटिंग विद xylem and phloem, वी कॉल इट इज सिस्टमेटिक herbicides. Or those are not transporting, we just apply it externally, that are called foliar contact, that is paraquat, cobra, bactril, basagran. All these are the herbicide translocating in plant. So here you can read about different herbicides are translocating within the plant with the help of xylem and phloem tissue. So I think you can read it properly, this paragraph. If you will face any problem, you can ask later to me, but I don't want to read it as I have already explained you each and everything. So that is herbicide can be translocated in xylem, the phloem, or both. So those are translocating with xylem, phloem, or with both, that are called systematic herbicides. Translocation depend upon the chemical and the plant species. So the translocation also depend on the on the so the herbicide translocated only in xylem and are more effective as soil applied. ठीक है, तो जो हमने हर्बिसाइड जाइलम के साथ किए हैं वो हम ऑब्वियसली सॉइल में करेंगे, क्योंकि जाइलम ट्रांसलोकेट करेगा सॉइल से ली पार्ट में, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए गवर्नमेंट। हमने जो हमारे हर्बिसाइड है वो हमने कहाँ पे अप्लाई किए हैं, सॉइल पार्ट में। क्लियर है? तो लाइक एंड और किसके लिए इफेक्टिव हुए, पोस्ट इमरजेंस ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज ट्रांसलोकेशन अक्कर ओनली अपवर्ड. Then atrazine is the good example of herbicide, and in the example in this diagram you can see atrazine, command and balance. These are the good examples that translocated only in the xylem. Phloem translocated herbicide that move downward and disturb root, rhizome growth as well as top growth, providing best perennial weed control. तो जाइलम फ्लोएम की हमारी डाउनवर्ड तो है ही है, अपवर्ड भी है। जो अपवर्ड है वो हमारी क्या करेगी, पेरिनियल वीड कंट्रोल में हेल्प करेगी। टॉर्डन, 2D4, बेनवल एंड राउंड अप एग्जाम्पल किसकी हैं, सिस्टमेटिक हेर्बिसाइड्स की, जो फ्लोएम के थ्रू हमारे क्या होती हैं, ट्रांसलोकेट होती हैं और हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। हमें लॉन्ग टर्म वीड कंट्रोल में इससे क्या होती है, हेल्प होती है। ठीक है, तो जो हमारे रिड्यूस हर्बिसाइड्स हैं वो कई बार वो नहीं ट्रांसलोकेट होते, क्यों, क्योंकि प्लांट के बीच में रेजिस्टेंस होती है। प्लांट हैविंग अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस characteristics, or you can say trait, which inhibit the action of herbicide over it. So probably the result only marginal decrease in plant susceptibility. So if we applied, only very few chances of susceptibility of plant will take place. This is all about the absorption and translocation of herbicides. Then now in the lecture we will discuss one more topic, that is mode of action. In the mode of action we will see how the different herbicides are absorbed and how what type of function they are performed, what type of action they performed, or what type their steps they follow to cause plant death. So the term mode of action refer to the sequence of the events of absorption into the plant to the plant death. The mode of action of the herbicide influences how the herbicide is applied. तो हम हर्बिसाइड को कैसे अप्लाई किया जाए कि जो हमारा हर्बिसाइड है वो प्रॉपरली प्लांट के ऊपर क्या करे, एक्ट करे और उसको डैमेज करे।
तो उसकी कहते हैं कुछ एग्जांपल हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स की। वो मेनली क्या करते हैं, जो हम जिसको हम फॉलियर हर्बिसाइड भी बोल देते हैं, जो सिंपल डिस्टर्ब करते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं, एक्लीफ्लोरफन दैट इज़ ब्लेजर, पैराक्वेट, ग्रामोजन एक्स्ट्रा, नीड टू बी अप्लाइड पोस्ट इमरजेंस टू लीव टिश्यू इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। कहते हैं अगर हम इसको पोस्ट इमरजेंस के लिए करेंगे तो ये क्या होंगे, हमारे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, जो पत्ते के ऊपर ही एक्ट करेंगे और पत्ते की मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके उसको क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, डेड कर देंगे। तो सेडलिंग ग्रोथ के लिए इनहिबिटर्स कौन कौन से हमारे कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं, ट्राइफ्लोरालिन दैट इज़ ट्रेफलन एंड अल्कोरोल अल्काकोलोर। अल्काकोलोर कौन सी हमारे लैसो, नीड टू बी अप्लाइड टू दिस सॉइल। ये हम सॉइल में देंगे, जो क्या करेंगे, सेडलिंग्स को की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, कि जैसे ही जर्मिनेशन हुई है, सेडलिंग निकली है, वैसे ही उसको वो क्या कर देंगे, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे न्यूली जर्मिनेटेड सेडलिंग की। तो हमारे हर्बिसाइड्स to be affected, what are the points, what are the characteristics that a herbicide would be effective, that it may cause the death of the plant, or it produces desirable results, that we can get rid from the perennial, especially perennial weed plants. So what are the characteristics adequately contact plant, that herbicide must contact with plant properly, that there is no hairy surface, no dense hairy surface over it, no wax over it, just simply easily it can, the spray droplet can be absorbed by the plant part, be absorbed by the plant. Second, that is I already explained, that is absorption is must over the plant surface. If there is absorption, then ultimately the next step will take place and show their action. Third, moving within the plant to the site of action, that is there is proper translocation of herbicide in the systematic herbicides, or without being deactivated, can move at the proper site easily, reach toxic level at the site of action, or produce toxics that ultimately damage or prevent the growth of the seedling, or you can say the leaf of the plant, that is pre-emergence or post-emergence. Determine whether the herbicide will contact germinating seedlings, root, shoot, or leaf of plants. Then these are the some herbicide families that are used for the particular site or for the particular time to inhibit the growth of the weeds, or to get rid from the problem of, or to get rid of weeds, and for the weed control. The first family of herbicides is is the growth regulator herbicides. Growth regulator herbicide, that is 2,4-D, MCPP, dicamba, and triclopier. These are the most foliar applied herbicides. ये कौन कौन सी है जो foliar applied herbicides हैं? These are the contact herbicides, applied herbicide, which are systematic and translocated both. These are the systematic, translocate in both xylem and phloem of the plant. They mimic natural plant auxin, causing abnormal growth and disturb the conductive tissue of the plant. And the injury from this family of herbicide consists of twist and malformed leaves and stems. तो ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह से एक्ट करते हैं, उनकी तरह मिमिक्री मतलब उनकी नकल करते हैं, बट उनकी जैसे इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जो ग्रोथ होने से क्या होती है, जो हमारे कंडक्टिव टिश्यूज़ है जाइलम एंड फ्लोएम, उनकी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, और उनकी वजह से रुकने से जो पौधा है वो उसके पत्ते माल फॉर्म्ड, मतलब बहुत ही
छोटे रह जाते हैं, और स्टैम्प भी, जिसकी वजह से प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती वीट की। देन सेकेंड फैमिली, देन इनहिबिटर्स ऑफ अमाइनो एसिड सिंथेसिस, जो क्या करते हैं अमाइनो एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे। जो इन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्रॉपर हमारे प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। जो अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो हम प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो उसकी ग्रोथ ना होने के कुछ हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे कि वो छोटा रह जाएगा प्लांट, और उसमें क्रिटिकल प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी पौधा है, जो हर वीड है, वो प्रॉपरली अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। तो कौन कौन से हैं, ग्लाइफोसेट, हेलोसल्फ्रॉन, देन मेजल थाइपेयर एंड सल्फोमेट्रोन। these are the amino acid synthesis herbicides. So these are translocate in the phloem with photosynthesis produced in the leaf, and in this family move readily after root or foliar absorption, or move after root and foliar absorption. So these are mainly the inhibitors of amino acids. Cell disruptors, those these are the herbicides. So these are both soil and foliar applied, so with limited movement in soil. तो these herbicide enter the plant through the leaves and stem and the roots. तो इसमें herbicides जब पत्तों से, जब स्टेम से, जब जड़ों से अंदर एंटर कर जाता है, और क्या कर जाता है, और उनके अंदर एंटर करने से यह क्या करता है, मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है, विच वी कॉल्ड नेक्रोसिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। देन लिपिड बायोसिंथेसिस। लिपिड बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, ड्राइक्लोफॉब, फ्लूजीफॉप, सेथोजाइडिम, स्लेथोडियम. These are the lipid biosynthesis inhibitors which inhibit the synthesis of lipids within the plant part, and these herbicide of this family move with the help of xylem and phloem of the plant and inhibit enzymes critical in the production of lipids. So ultimately, if lipids are not properly formed, then there is no proper formation of plant membranes that is essential for growth and metabolic process. The symptoms are stunning and death of the tissue within the growing point of plant. अल्टीमेटली जो हमारा पौधा होगा वो ग्रोइंग पॉइंट पे ही मर जाएगा, वो प्रॉपरली उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पिगमेंट इनहिबिटर्स, देन न्यूरोफ्लोराजन, फ्लोरिडो फ्लिडोन, देन अमिट्रोल. These are the inhibitor that inhibits the carotenoids biosynthesis, leaving chlorophyll unprotected and photooxidation. This result there is a lack color, then which in the symptoms include albino and bleached appearance of foliage. देन ग्रोथ इनहिबिटर ऑफ शूट्स, लाइक कौन कौन से हर्बिसाइड्स हमारे, थायोकार्बामेट हर्बिसाइड्स इंक्लूडिंग EPCTC, साइक्लोएट, पेब्यूलेट एंड मिलोनेट. दीज आर द ग्रोथ इनहिबिटर्स ऑफ शूट्स that are translocated with the help of xylem and with the transpiration stream to the growing point of the shoot. Then mode of action is unclear but affect developing leaf in the growing point. जो हमारे डेवलपिंग लीव्स हैं, शूट्स हैं, उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट ससेप्टेबल होगा। तो इसके सिम्टम्स कहेंगे स्टनिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ सीडलिंग लीव्स, और जो हमारे सीडलिंग लीव्स हैं वो हमारे छोटे छोटे होंगे, और उनकी जो हमारी ग्रोथ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। हर्बिसाइड विच डिस्टर्ब्ड सेल डिवीजन कौन कौन से हैं, ट्राइफ्लूरारिन, देन DCPA, डाईथायोफिलाइल, ओरिजालिन, देन प्रोनामाइड, पेंडिमिथालिन, देन नेप्रोपेडमिन. These are the herbicides. You must learn the names of all these herbicides
These herbicides disturb the cell division. If once the disruption of cell division or takes place, so ultimately it stop the cell division before mitosis. So due to the stoppage of mitosis, there is no proper differentiation of cells, that is, it cause stunning growth and stoppage of the growth of the part of the plants, different part of the plant, that is, which include stunning and swallow root tips. Then cell membrane disruptors, again paraquat, diquat, glufosinate, acid, oils and soaps. These all are the cell membrane disruptors. These are applied foliar applied with no soil activity. These significantly within the plant once absorbed, so they alter or disturbed the cell membrane and react with plant process to form destructive compounds which result in membrane damage. Symptom is rapid necrosis of the leaves and stems. जो हमारी लीव्स हैं उनकी प्रॉपर सेल डेथ हो जाएगी और स्टेम की सेल्स की भी, अल्टीमेटली द प्लांट विल गेट डाई. द इनहिबिटर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से? अट्राजिन, सिमाजिन, मेट्रीब्यूजिन, सायानिजिन, प्रोमेट्रियन, डायूरोन, लेनोरोन, ट्यूबोथायोयूरोन and bromosil. These are the inhibitors of photosynthesis that block the electron transport system of photosynthesis and causing a building up destructive high energy product which destroy chlorophyll. जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चेंज नहीं होगी तो हमारी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस, हाई एनर्जी प्रोडक्ट हमारे टूट जाएंगे, वो टूट जाएंगे, दैट इज़ एटीपी. तो उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से क्लोरोफिल हो जाएगी. अल्टीमेटली जो हमारा लीव टिश्यू है वो भी प्रॉपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्लोरोटिक दैट इज येलोइंग ऑफ लीव, तो अल्टीमेटली कॉजेज नेक्रोटिक दैट इज नेक्रोस सेल डेथ ऑफ द प्लांट टिश्यूज or death of cells of a plant tissue. Thank you very much. This is all about your today's lecture. Okay.